Greetings to all my viewers. This is your host Slim bin Muhammad Rafi, and you are listening to me from Zamir Universal Television Network. I want to now talk to you about a new phenomena of totalitarian system, which is wish of every person, whether is there as a elected prime minister, president, or is selected or nominated. How come this wish, this practice, which we have seen in the past, and the recent example is in the memory of many people. I can go back thousands of years and start from Nimrod and to Pharaoh, but I will start only with Adolf Hitler. He wanted the total control over judiciary, over executive, over all his armed forces in decision making, and see what he did to the world in the Second World War. The ripples of that Second World War are even heard today. In many countries of the world, you can still see the bombardments, still see the disasters, still see the buildings all demolished, still see poverty, still see conflicts which resulted as a result of that World War. You see what the American, the most cruel nation on earth, did to those cities in Japan, Hiroshima and Nagasaki. There was absolutely no need to drop nuclear bomb, but this is again a man's wish to show that he is the strong, and God forbid he is nothing. One small tsunami, one small thunder can just kill him and make this planet clean of that garbage and scum. But unfortunately, they don't listen. When they go to the graveyards and they see their ancestors, they see their presidents, they see their chief justices buried there, helpless, they learn nothing. When they go to other countries and see their monuments and pay tribute to the unnamed soldiers, then they learn nothing. When they go and visit Hiroshima, Nagasaki, and see the cancer patients, see completely demolished, cities which they were once were all living and they were all happy people there, and now with their dropping of nuclear bomb. I'm going to start you with the unrest which you are seeing now in Israel, an illegitimate state, an apartheid state. But look at the people. People are people. Human are human, whether they are Israelis, they are Jews, they are Christians, or they are Muslims. Israel. Rabbi, thanks so much for being with us. My first question to you, though, is have you ever noticed a situation historically, I guess in the 21st century, where Bibi Netanyahu has been backed into this corner politically, so much so he has had to now change course? Is that something new? Well, he's certainly adept at changing courses, but he's never been in a coalition like the one he had to assemble for this government. It's the most extreme, the most right-wing government Israel's ever had. It's ultra-Orthodox and it's ultra-nationalist. And frankly, he had no choice today. He certainly has been frustrated and trying to figure out how to navigate all this. And yesterday, after he fired the defense minister, the eruption of voices and protests was overwhelming. So he really was forced to put a pause on the judiciary reforms, but he also had to pay a high price because, as Trey just said, holding this coalition together is a full-time job. And the most extreme voices were threatening to leave the coalition, which would, of course, collapse the government. And one of them, Itamar Ben-Gvir, who's the Minister of Public Security, he said the price for me staying in is I need to know that there will be a National Guard, which is an extra militia to be under his direct authority. So Ben-Gvir was probably one of the most problematic and disruptive figures in Israeli politics, is now in charge of a very large swath of police. So that was part of the price of holding this coalition together. And it is a very challenging set of constraints that this prime minister has going forward. Okay, but what about Netanyahu's comments to the Israeli people just tonight? Did they, I guess, alleviate any concerns? Did they mitigate the problem? Did you watch them?
Yeah, no, I think people certainly have seen, Prime Minister Netanyahu make promises and then break them. Obviously, he's not the only politician probably on the world stage who has done that. So I don't think people were particularly, I would say, kind of comforted. And the frank truth is that going forward, we have not only Passover the middle of next week, we have the Holocaust Remembrance Day, we have the 75th anniversary of Israel, and then after those observances, which are primary observances in Israel, then there will be some kind of resumption of this legislative process. And the prime minister did not say, I'm going to for sure make compromises. And it may well be that members of his coalition have already said this will be pushed forward in the form that it's in. So the process of negotiating, of coming up with compromises, is what the president, Isaac Herzog, wants. It's what the opposition says it wants. But it's anything but assured that there will be a genuine good faith effort to come up with a better resolution that's good for the entire population of the state of Israel. See that Netanyahu, when he brought this, that he wants to control the judiciary and appoint judiciary in Israel himself, and he was going to introduce his defense minister a new law. And look how the people came out, that if he got total judicial system under him, if he got the power to appoint the judges in the Supreme Court and lower courts, imagine what he will do. Already look what he has done to the peace in the whole of Middle East, with bypassing everything and bringing settlers, all the criminals, or the alcoholics, all the people who do all, they're gamblers, they live on interest. They do all the bad things, and he gathered them all and opened them, and they called them settlers, which will go and knock at the door and occupy the home and throw away the Palestinians who've been living there for hundreds and thousands of years. Now look at the public out in the streets in Israel and listen to the audio right behind this. And that is in Urdu, but you will find captions as you can see. But you can see the optics, see the Israeli flag, see the people all over the road in Israel wanting to get rid of that tyrant. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे इसराइल में अवाम हर जगह पर सड़कों पर आई हुई है और शायद ही इसराइल का कोई कोना हो जहां पर अवाम इस वक्त ना निकली हो। ये इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस है और वहां पर उनको कमांडो फोर्सेस तैनात करना पड़ी है, यानी स्पेशल फोर्सेस। ये वो वाली फोर्सेस हैं कि जब हमास से लड़ाई होती है तो वो सड़कों पर ले आते हैं। ये फोर्सेस उनको डिप्लॉय करना पड़ी है कि अवाम इतने गुस्से भरी तादाद में निकले हैं कि इसराइल की तारीख में कभी इतना बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। और ये एहतजाज हो रहा है नेतन्याहू के खिलाफ, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, कि उसको फारिग किया जाए, उसको निकालने के लिए अवाम आई है। अब ये असल में हुआ क्या है कि अवाम सड़कों पर आई है और ये क्या खेल होने जा रहा है इसको समझिए। हुआ यूँ है कि देखिए, आप अगर इसको पाकिस्तान के हालात से कंपेयर करेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल ऐसी होती नजर आई। एक तरफ पाकिस्तान में आप देख लीजिए, इमरान खान को आपने निकाला हुआ है और उसके खिलाफ फैसले, केसेस और ये वो, इवन के सारी दुनिया ने देखा कि जो मामला चला उसकी पार्टी के खिलाफ और कोई बड़ा एक्शन नहीं आ रहा। और जजेस को तकसीम करने की कोशिश मरियम और दीगर जो बैठे पीछे हैं वो सारे कर रहे हैं। अब जरा आप एक मिनट के लिए पाकिस्तान की सिचुएशन को देखें, दूसरा आप इसराइल को देखें। इसराइल में हुआ यूँ है कि नेतन्याहू के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकली है। उसने अपने डिफेंस मिनिस्टर को, यानी वजीर दिफा को उड़ा दिया है, फारिग किया है। हुआ यूँ है कि वो एक रिफॉर्म बिल लेकर आ रहा है। आप जरा इसराइल की जो अवाम है देखिए जरा, वो कैसे इंसाफ के लिए निकलते हैं। यानी ऐसी अवाम, हम लोग अक्सर गुफ्तगू करते हैं इनके खिलाफ, इनके प्लान और ये वो, आप देखिए जरा वो अवाम कैसे निकली है भाई। इन्होंने प्लान ये किया था नेतन्याहू ने कि जजेस को अपॉइंट करने वाली जो कमेटी है वो हुकूमत के पास रहेगी, यानी उसमें जुडिशरी का जो इख्तियार है वो कम करने जा रहे हैं कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अनफिट या अनडिक्लेयर नहीं कर सकती, नाअहल नहीं कर सकती और उसको ओहदे से नहीं हटा सकती। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा कानून, कोई चीज़ें वो किसी तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। ये क्या करने जा रहे हैं? असल में नेतन्याहू अब ऐसे लॉज लाना चाह रहा है जो असल में जिस मकसद के लिए इसराइल को बनाया गया था, अब उसको वो अचीव करवाना चाहते हैं। देखिए हो क्या रहा है पूरी दुनिया में। ये इसराइल के अंदर अगर आप ये सोचते हैं कि सारे ही उसी एजेंडे पर आए हैं
जिस एजेंडे के ऊपर इसराइल की बुनियाद रखी गई थी कि उनका मसीहा और ये सारा कुछ। अब इसराइल के अंदर दो कैटेगरीज है, एक है सेकुलर जो कि मजहब से थोड़ा सा अलग है, यानी मजहब से बेजार भी है या अलग है, वो अपने आप को पूरी दुनिया के साथ फिट समझते हैं और वो इंतहा पसंदी के खिलाफ है। जिस तरह पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के खिलाफ है, भारत में है, इस तरह इसराइल में भी है। अब कोई भी पूरी दुनिया के अंदर इंतहा पसंदी को बाय नहीं कर रहा। अब नेतन्याहू ने कुछ फैसले ऐसे करने हैं, चाहे वो मस्जिद अक्सा के हवाले से हो या चाहे कोई और फैसले हो, इस फैसलों को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट या वहाँ के जो जजेस हैं वो उड़ा देते हैं। और कई दफ़ा हुआ, अब वहाँ पर इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है, इतना बड़ा वहाँ पर क्राइसिस आया हुआ है कि वो अब जजेस को कंट्रोल करे। उस बिल को असल में वो इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे, उनके वजीर दिफा ने उसके खिलाफ काम किया, अब उसको फायर किया और अवाम पूरी सड़कों पर आ गई। अब अवाम ये कह रही है कि नेतन्याहू फारिग हो, ये अनफिट है, इसकी हेल्थ ठीक नहीं है, इसका दिमाग काम नहीं करता, और इसको कहा गया है कि तुम अपने ओहदे से बर्खास्त हो जाओ और तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं होगे तुम इसराइल का मामला ठीक कर सको। अब आप सोचिए जरा, उनकी जुडिशरी पर हर्फ आया, जज किसी ने भी नहीं कहा कि अवाम सड़कों पर आए, अवाम पहले ही निकल आई कि तुम इंसाफ की राह में, यानी तुम अपने इक्तदार को बचाने के लिए तुम जुडिशरी पर हमला करो। अगर ऐसा हो गया तो वहां पर इंसाफ का निजाम कायम नहीं करेगा। This is the wish of every tyrant. And it's not only limited to Israel. I can take you back now from another part of the world and take you to Narendra Modi, 2014, when this rascal, this butcher, this criminal, this divider, this the hater, and the enemy of the Muslims and enemy of the Christians, enemy of the Dalits, how he controlled the Supreme Court, how he controlled the Election Commission, how he controls all the rascals, the killers, the rapists of the India, and he defeated the National Congress Party and all other parties which were secular, and he demolished almost every fabric of democracy in there and came out with the extremist state which is there now. And he advocated to drink cow urine, and if anyone handles cow, and he slaughtered them and killed them, which will be usually Muslims, but all the meat exporters of beef are Hindus. So look at the bigots of this gentleman. Look at this, the Adani shares at this moment. Look at the corruption. It's not Nawaz Sharif of Pakistan who hits the number one in Panama scandal. It's the Narendra Modi and his friends who are in India, who've been selling the stocks, and look how they have robbed, how they have fleeced, and look what came out in Australia and New Zealand in the world to expose that gentleman. He was his closest bosom friend of Narendra Modi. Imagine how much billions and trillions would have been siphoned by this man. Look at this, he says he is a tea vendor. Look that he says and look what he has done to India. सबसे पहला आरोप है लैंड स्कैम का। ये उस समय की बात है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त गुजरात में अलग अलग इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को जमीन की जरूरत थी अलग अलग प्रोजेक्ट्स करने के लिए, तो उन्होंने जमीन खरीदी। जैसे कि के रहेजा कॉर्पोरेशन ने जमीन खरीदी 470 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। मारुति सुजुकी को जमीन मिली 670 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। फोर्ड इंडिया, टाटा मोटर्स, टीसीएस ने करीब 1100 रुपए दिए पर स्क्वायर मीटर। टोरेंट पावर ने 6000 रुपए दिए पर स्क्वायर मीटर। लेकिन जब अडानी ने अपनी जमीन खरीदी पोर्ट बनाने के लिए, तो उन्हें ये जमीन मिली सिर्फ 32 रुपए पर स्क्वायर मीटर में, और ये मैक्सिमम था। कुछ जगहों पर इस जमीन का प्राइस 1 रुपए पर स्क्वायर मीटर तक था। ये मैं अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूं, 26 अप्रैल 2014 का बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, हेडलाइन पढ़ सकते हो। अडानी ग्रुप गॉट लैंड एट चीपेस्ट रेट्स इन मोदीज गुजरात। तो आरोप यहां पर ये कि जमीन घोटाला हुआ। इसके बाद अप्रैल 2015 में सीएजी ने अपनी गुजरात असेंबली में रिपोर्ट दिखाई। इन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने फॉरेस्ट लैंड को सही तरीके से क्लासिफाई नहीं किया, जिसकी वजह से करीब 58.64 करोड़ रुपीस का बेनिफिट पहुंचा गौतम अडानी प्रमोटेड मुंद्रा पोर्ट को। यह चीज हुई साल 2008-9 में। इसके बाद 2022 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सेम चीज को दोबारा दोहराया। इन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन करी जानी थी जमीन की इको क्लास 2, लेकिन इसे क्लासिफाई किया गया एज इको क्लास 4, जिसकी वजह से सरकार को 58.67 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ। और सरकार के पैसे का नुकसान मतलब जनता के पैसे का नुकसान। दूसरा आरोप है फॉरेस्ट की जमीन का दुरुपयोग किया जाना। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने मई 2014 में, और टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए अक्टूबर 2014 की। सेंटर क्लियर्स 370 एकड़ फॉरेस्ट लैंड फॉर अडानीज कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट।
ये हुआ महाराष्ट्र में। इसके बाद 2018 में और 142 हेक्टेयर्स को सैंक्शन किया गया, इस बारी सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा, और दोनों को उस वक्त बीजेपी के द्वारा हेड किया जा रहा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिस्पॉन्स में कहा कि ये जो फॉरेस्ट जमीन डिमांड करी गई है इनके द्वारा, ये बेयरेस्ट मिनिमम है और इस जमीन को दिए जाने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आप पूछोगे कितनी एम्प्लॉयमेंट, तो इन्होंने कहा कि 100 लोकल रेजिडेंट्स को जॉब्स मिलेंगी और इनडायरेक्टली 250 रेजिडेंट्स को, टोटल में 350 जॉब्स। मार्च 2018 में ही अडानी ग्रुप को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला करीब 1550 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट लैंड यूज करने का मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने इस चीज को लेकर कहा कि ये फॉरेस्ट लैंड जो है ये नॉन फॉरेस्ट्री यूज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ज्यादातर इसमें से। तीसरा आरोप है यहाँ पर एयरपोर्ट घोटाले का आरोप। नवंबर 2018 में कैबिनेट 6 एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन को अप्रूव करता है। अब यहाँ पर एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन कराया जाना अपने आप एक चर्चा का मुद्दा है। ये भी सवाल उठाना चाहिए यहाँ पर कि जो एयरपोर्ट प्रॉफिट कमा रहा हो, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सरकार के लिए, उसे क्यों प्राइवेटाइज किया जाता है। जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन सरकार के अंडर है और प्रॉफिट कमा रही है तो उसका प्रॉफिट जाता है सरकार के पास, जिसे जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर उसे प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो उसका प्रॉफिट सिर्फ एक कॉर्पोरेट कंपनी के पास जाएगा और फायदा भी उसी को ही होगा। पहले एक्सक्यूज दिया जाता था कि जो लॉस मेकिंग पब्लिक कंपनीज हैं उन्हें प्राइवेटाइज किया जा रहा है। चलो लॉस मेकिंग में बात समझ में आती है, लेकिन ओएनजीसी का एग्जांपल लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में उन्होंने 40,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। इंडिया की सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई थी रिलायंस इंडस्ट्री के बाद। लेकिन फिर भी सरकार ओएनजीसी को कहती है कि ऑयल और गैस फील्ड्स को प्राइवेटाइज करो। एनीवेज, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन पर आए तो नवंबर 2018 में एक कमेटी बनाई गई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी। इस कमेटी का काम था क्राइटेरिया डिसाइड करना कि प्राइवेटाइजेशन के वक्त एयरपोर्ट्स किसे दिए जाएंगे। इस कमेटी ने 2 डिसीजंस लिए। पहला कि जो भी कंपनी इन एयरपोर्ट्स को खरीदेगी उन्हें पहले से कोई एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है इस फील्ड में, और दूसरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक कंपनी कितने एयरपोर्ट्स की बिडिंग कर सकती है। तो इसके बाद हुआ क्या कि सारे के सारे 6 एयरपोर्ट्स अडानी के पास गए और अडानी कंपनी के पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस भी नहीं था एयरपोर्ट्स चलाने का। अब ये रिपोर्ट किया जाता है दोस्तों कि जब ये हुआ था तब फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने अपने कंसर्न्स रेज किए थे इसके अगेंस्ट। इन्होंने कहा था कि ये बड़ी फाइनेंशियल रिस्क हो सकती है, एक ऐसे बिडर के हाथ में एयरपोर्ट्स दे देना जिसके पास कोई पहले का एक्सपीरियंस नहीं है एयरपोर्ट्स हैंडल करने का। इससे परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं, सर्विसेज की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। लेकिन इन ऑब्जेक्शंस को ओवर रूल किया गया और अडानी को ये 6 एयरपोर्ट्स मिले। अब इसी एलिजिड एयरपोर्ट घोटाले की कैटेगरी में एक और भी एलिजिड स्कैम है, मुंबई एयरपोर्ट का हाईजैक होना। वैसे ये सारे आरोप मैं खुद से नहीं लगा रहा हूँ, इन सब एलिगेशंस को लगाया गया था ऑपोजिशन लीडर्स के द्वारा पार्लियामेंट में। बस बात यह है दोस्तों, आप इनके बारे में डिटेल में इसलिए नहीं जानते क्योंकि मीडिया में इसकी कोई बात नहीं होती। तो बात India is one of the worst, the extremist, highly populated, with 70% population, 70% people who go and have open defecation, and they are the one who drink polluted water. They live in slums. They have no paved drains. The wealth is collected just between hands of the 10 to 20% people. So it's not just Israel. I given you example of India. Now let's move on to across the border to Pakistan. Look at 75 years what Pakistan has been doing. It's the same. Name is different. Country is different. And look how Nawaz Sharif and Asad Zardar, the 2 families of feudal lords, one just an iron scrap melter with a very, very poor background, today is the richest man in the world, and he is the first number 1 corrupt man, which I think that number should be changed to Narendra Modi, because he has bypassed Nawaz Sharif, and they are both bosom friends. He allowed him with all his entourage to attend his granddaughter's marriage without visa, without permission, without having any pushing to the airspace. And this is the friendship of 2 birds of feather flock together. This is how the corrupt people, this is what you see the friendship of Bibi Netanyahu with Narendra Modi embracing each other, because they are the 3 most corrupt people on the universe. Now, look at their action are similar. Look at the wish of these totalitarian as a control over the country is the same. One has been disqualified for life, but look at, he is commanding through the army, through the establishment, through the judiciary, and he is dictating all the things and all the rest in Pakistan.
Let's turn to a breaking story that we're hearing out of Pakistan, where supporters of the ousted Prime Minister Imran Khan have been arrested in Lahore. There were confrontations with police officers ahead of Khan's planned election rally. But just hours before the rally, authorities imposed a ban on all demonstrations and large gatherings, which would last for a week. Let's go live to Kamal Haider, who can explain all of this for us. He's in Lahore. First of all, Kamal, tell us about these arrests. Well, these party supporters were preparing to go on a peaceful rally because elections is less than 2 months away in the province of Punjab. Imran Khan, of course, had announced that he would be holding a peaceful rally. However, all roads leading to his residence in Zaman Park, which is not situated very far from where we are, have been blocked by shipping containers and heavy contingents of anti-riot as well as regular police. Now, earlier there were scuffles with his supporters, despite the fact that Imran Khan had said that this would be a peaceful rally to mark the beginning of the campaign, the election campaign. So, indeed, the situation quite tense. We were able to see police prison vans taking away dozens of supporters of the party who were chanting in favor of their party leader and the party. The government, of course, on the other hand, is preventing this because they're afraid of Imran Khan, who has been scoring political victory after victory. And although there are over 70 cases against him, which are seen as pressure tactics, he's remained determined and says that he will continue, that this is his peaceful constitutional right. So indeed, the government may be overreacting on this. This is, after all, a decision from the Supreme Court that election should be held on the 30th of April. Imran Khan party supporters have also been told not to take the law into their own hands. They have warned that the government may be using this as an excuse to create a law and order situation in order to postpone those elections. All the debt on Pakistan, all the highly productive agriculture country, now starving, now begging. Now look at the same thing is in India, same thing is in Israel. So the reason I'm bringing you up this with the optics, and anybody who raises his voice against them, they'll arrest him. They'll put him behind the bars without trial, without any. There are hundreds of FIRs against them. This is how recently you see that Narendra Modi, he got Rahul Gandhi, a gentleman, really a secular with a long family history of independence and sacrifices. He got him disqualified as a parliament member. This is the same thing in Pakistan. And all the unrest you see in Pakistan, and you see at the Minar-e-Pakistan, see the millions of people gathered here to listen to a person who says that I want justice for all, rich and poor. He does not want to control the judiciary. Only what he wants is that the judges should be not biased, judges should be non-partisan, and they should not be. But look at the other side of the fence, what Netanyahu wants. He wants judges just to obey him. If he demolishes the Masjid al-Aqsa, they should not pass any rule against him. If he kills all the Palestinians and occupies all the West Bank, they should not make any decision. If he takes up all the gifts and his wife and have the most corrupt person in the world, there should not be any verdict to remove a prime minister. So this is what he wants. And exactly that's what Narendra Modi wants. This is how he got decision in his favor. And he got it from the Chief Justice of India. And as soon as that chap retired, and God's curse may fall on him, there was no such thing as a birth of a Ram, and he just gave a verdict against the Muslims. ज़मीर यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर